Good morning everybody. Now in Unix and shell programming we move further. In last session we saw about the process. What is a process? Which kind of process? Like that. Now in today we saw some command related to process. Yes. Now the first command is ps. What is it? ps किसके लिए use होता है? ps is used to know the process attributes. Process have some different attributes, and if you can write ps, this is your prompt, and you can write ps and press the enter. When you press the enter, it will display these four attribute. One is the PID, then TTY, then time, then CMD. Now PID is a process ID. PID is a process ID. TTY is the name of your terminal. Then time. Time means it is a cumulative process time. Process कितना time लगा रहा है वो. And CMD. This is a command. And it is a login shell of this user. Particular users का जो command उसने दिया है या तो process का नाम. Particular command को ही हम process बोलते हैं तो उसका नाम. So now when you are showing some attribute of the process, you have to use ps. Just simple ps. ps लिखोगे and enter press करोगे, it will show you four different attribute. One is the process ID, the next one is the terminal, TTY is the terminal, the next is the process time, and the next last one is the CMD, that means a process name, means a command name. Now in process there are various different option with the ps. Now the first option is ps minus f और ps dash f. ps f का मतलब क्या है? f means a full. f का मतलब full. That means ps minus f, जब f use करोगे आप तो it will show you the detail listing of all the processes. Process का detail listing आएगा. Now detail listing means it will show you the UID, it will show you the PID, it will show you PPID, then C, then S time, then TTY, time and CMD. That means when you are use only ps, then it will show you the only four process attributes. But if you want to show all the attribute of the process, means if you want to show detailed attribute of the process, that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attributes. Yes, so then you can use ps minus f. The first UID. UID means UID is the user ID. That means it is the owner of every process. हर एक process का जो owner होता है उसका ID. That is the user ID. Second one is the PID. That is the process ID. Then PPID. That means it is a parent process ID. हर एक process का parent रहता है. ठीक है. एक parent के अंदर बहुत सारे child process रहती है. ठीक है. So वो parent process ID. Then what is a C? C that means CPU utilization of the process. आपके process में आपकी process CPU का कितना utilize कर रही है? That is. Then S time. S time means it is the time of process started. At what time your process will be started? Yes, आपकी process कौन से time पे start हुई है वो दिखाएगा. ठीक है. Then next is TTY, that is a terminal name. Then time, it will show you the process, total time of the process. Then CMD, that means a command name or process name. So when you want all the detailed attributes of the process, then you need ps minus f command. ps minus f का मतलब full detail of the process. Process की सारी details दिखाएगा. One is the UID, user ID, process ID, parent process ID, CPU utilization of the process, then process starting timing, then terminal name, then time, that means total time taken by the process, and the CMD, that is a command name or the process name. So this is the first option, ps minus f. Then the next option is ps minus u, and I am writing over here one angular bracket in the username. What is that? Username means when you run the command, then you have to provide the username over here. That means, for example, your username is BCA21, your username is BCA25, like that. My username is Tanvi, so it is like that. So minus u option क्या करेगा?
minus u option is used to display process of a single user. It will know the activity of any user. हर एक यूजर कौन कौन से कमांड दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको ps कमांड से मिलेगा. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, if I am using 5 different command, so when I am using ps minus u and the name of the user of mine, that is a bca. yes, तो मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल देखो, ps minus u bca. so when I am writing ps minus u and the name of the user, bca means what? It is the name of the user. so it will show me all the process of the bca user. only one user का सारा जो काम होगा, एक्टिविटी होगी, जो उसने जितना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, कमांड किया होगा, वो सब पर्टिकुलर यूजर्स की दिखाएगी. प्रोसेस लाइक अ प्रोसेस आईडी, टर्मिनल नेम, पर्टिकुलर टाइम एंड द process name, that means command name. So this 4 information is displayed for a particular user. ps minus u, when you are use minus u option, that means it will displaying a process of only a single user and you have to specify the name of that user. Now next one is ps minus a. next one is ps minus a. ps minus a का मतलब क्या होगा? ps minus a मतलब it will display the details of processes for all the users. जितने भी users है वो सारे users की डिटेल में दिखाएगा प्रोसेस. मतलब ps minus u से आप सिर्फ एक यूजर्स का इंफॉर्मेशन जान सकते हो, एक यूजर्स का प्रोसेस और कमांड्स जान सकते हो. उसी तरह से अगर आपके पास एट ए टाइम 10 यूजर्स वर्क कर रहे हैं एंड यू नीड टू नो द प्रोसेस of all the users, then you can use ps minus a. ps minus a is used to list the process of all users, but it doesn't display the system process. सिर्फ यूजर्स की प्रोसेस दिखाएगा, सिस्टम प्रोसेस नहीं दिखाएगा. माइनस ए मतलब ऑल, माइनस ए मतलब ऑल. सो ओवर हियर आई गिविंग यू द एग्जांपल. लेट अस सी ps minus a and press the enter. when I press the enter, it will show me the information PID, TTY, terminal name, time and the command name or process name for all the users. हर एक users की ये 4 information मुझे दिखाएगा. तो सिंगल यूजर के लिए ps minus u and all users के लिए ps minus a. but system process नहीं दिखाएगा दोनों में. Now the next is ps minus e और ps minus a. 3 है. जैसे कि ps minus u, ps minus f, वैसे ही यहाँ पे या तो ps minus आप ही यूज करो या तो ps minus a. Now what is the meaning of using this ps minus e or ps minus capital A? If you want to display the process of a particular users with a system process, आपको सिस्टम प्रोसेस भी जाननी है और यूजर्स की प्रोसेस भी जाननी है, दोनों जाननी है, then you can use minus e or minus a. That means it will displaying all the processes including the system and the user process both. Apart from the user process, a number of system processes keep running all the time. That means कि यूजर्स प्रोसेस मतलब कि मैंने vi नाम के एक फाइल दी, cp नाम का एक कमांड दिया, cat नाम का एक कमांड दिया, तो वो तो जितना टास्क उसका होगा वो कंप्लीट करके वो टर्मिनेट हो जाएगा. बट द सिस्टम प्रोसेस इज ऑलवेज रनिंग ऑल द टाइम, मतलब कि वो चलती ही रहती है. नाउ व्हेन यू प्रेस ps minus e like that, ps minus e and press the enter, so it will show me the PID, TTY is the name of the terminal, then time and the command process name. Now over here TTY, you see this question mark. Yes, what was that? Yes, the system processes are easily identified this question mark in the TTY column. Now over here जैसे मैंने बोला ps minus e और ps minus a is used to displaying both the processes, system process and user process. But how to know which process is system process and which process is user process? So it is very easy to identify the system process. See over here in the TTY column, terminal name column में
जहां जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखे, that process is known as a system process and the remaining process are known as a user process. Getting all of you? क्वेश्चन मार्क जहां पे होगा वो आपकी यूजर प्रोसेस नहीं होगी, वो आपकी सिस्टम प्रोसेस होगी, और उसके अलावा जो भी होगा वो आपकी यूजर प्रोसेस होगी. सो ओवर हियर इन दिस एग्जांपल दिस 3 are the system process, but this is my user process. Okay, yes, all of you. So PS minus U, PS minus A, PS minus E, PS minus capital A and PS minus F. This much options are available in the process, right? Now, how to create the process? There is a 3 system calls are there. Yes, there are 3 different phases are there and 3 system calls are there. One is the fork, another one is the EXEC and another one is the wait. Now, what is the fork? Fork is used to create a new process. नई child process create होती है तो कौन सा system call लगता है? Fork. So over here the process in Unix is created with the fork system call and it creates a child process. When any new process is created, yes, so at that time the fork system call is done, right? जैसे कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है, तो एट दैट टाइम कौन सा सिस्टम कॉल लगता है? फॉर्क सिस्टम कॉल. फाइन. नाउ द चाइल्ड प्रोसेस हैज द सेम एनवायरमेंट एज इट्स पेरेंट्स, बट ओनली द पीआईडी इज द डिफरेंट. दैट मीन्स के आपकी जो प्रोसेस आईडी होगा वो सबका डिफरेंट होगा. पेरेंट प्रोसेस आईडी सबकी एक होगी, पर सबको डिफरेंट यूनिक प्रोसेस आईडी जनरेट मिले करने, मतलब कि वो जनरेट करके देता है. यस, सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ फॉर्किंग. This procedure is known as a forking. Yes, so when a process in Unix is created with the fork system call, it will create a child process. Every new process is created because existing process creates an exact copy of itself. So this child process has the same environment, but its parents is different and the parent ID and process ID is different. Yes. Now this procedure is known as a forking. Now next is the EXEC. Only forking हम करेंगे, मतलब कि only fork से नई सिस्टम, मतलब कि नई प्रोसेस क्रिएट होती है, but it is not enough to run the new program. So after the forking, some address space is needed for the child process for overwriting some data, overwriting some new data. So for execution of the processes, we need this EXEC system call. कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो फॉर्क से क्रिएट होती है, बट क्रिएट होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूट होता है. तो एग्जीक्यूट करता है जब भी कोई चाइल्ड प्रोसेस, तो उसको कौन सा सिस्टम कॉल लगेगा? EXEC. फाइन. बट इट विल, EXEC जो है वो कोई भी नई प्रोसेस क्रिएट नहीं करता है. इट विल सेट सम एड्रेस space for the child process and assign some execution time and assign some execution for overwriting the process data. Yes, now the PID and the parent process ID, वो जो fork से create हुई process में वो टाइम पे जो PID और parent PID होता है वो ही EXE में लगता है. EXE के अंदर कोई भी प्रोसेस का PID, प्रोसेस आईडी एंड पेरेंट प्रोसेस आईडी चेंज नहीं होता. इट विल रिमेन अनचेंज. ओके. देन लास्ट वन इज द वेट. वेट क्या है? दैट इज अ वेट इज अ सिस्टम कॉल. यू नो वेरी वेल वेट सिस्टम कॉल कब होता है? यस, व्हेन पेरेंट एग्जीक्यूट द वेट सिस्टम कॉल टू वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. पेरेंट कब वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है? जब चाइल्ड प्रोसेस उसका टाइमिंग, जो भी कंप्लीशन टाइमिंग है, वो एग्जीक्यूशन टाइमिंग है, वो कंप्लीट करेगा, तब तक पेरेंट उसकी वेट करेगा, तो तब तक वेट सिस्टम कॉल में रहेगा. Then after the completion of the child process, it picks up the exit status of the child and then continue with some other function. जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, वो तुरंत एग्जिट स्टेटस ले लेता है एंड वो न्यू नेक्स्ट कंटिन्यू करता है कि नेक्स्ट फंक्शन पे जाना है तो उसको.
फाइन. सो वेट सिस्टम कॉल मतलब कि पेरेंट वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कब करेगा, जब वो वेट कर रहा है चाइल्ड के लिए, चाइल्ड प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करे उसके लिए, तब पेरेंट वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है. फाइन. नाउ there are two important attributes are inherited by the child process from the parent. That one is the UID मतलब user ID, GID मतलब group ID, parent group ID. yes, ये जो चार है, group ID, parent group ID and user ID. yes, ये जो है वो चाइल्ड प्रोसेस की कहाँ से मिलती है उसको, अपनी पेरेंट प्रोसेस से. सो these attributes are inherited by the child process from its parents. okay, बहुत सारी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पेरेंट प्रोसेस अपनी चाइल्ड प्रोसेस को देती है, तो चाइल्ड प्रोसेस उनसे इनहेरिट करके लेती है, जैसे कि रियल यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, जीआईडी, पीजीआईडी मतलब पेरेंट ग्रुप आईडी, नाइस वैल्यू, environment settings, current working directory and memory segments. These all are attributes are inherited from the parent to its child. Child को मिलेगा. Fine, all of you? Yes. So, are you getting this mechanism of the process creation? Yes. I hope you understand this session. Fine.